Dear students, as I have written down on the blackboard, the board you can see behind me, it's gender typing at work today. So we are going to discuss about gender stereotyping at work. Gender stereotyping at work means stereotypes which we see in the workplace or in the employment market. So let us understand first what is stereotyping or what is a stereotype. We have some deep rooted ideas about the attributes and capacities of men and women in our minds, and accordingly that form the expectations of the role to be played by men and women in the workplace. सो आम बहुत गुड़ा डीप रुटेड आइडिया आम भितर एते मूल करी रही एते घर करी रही आम भितर किसी आइडिया जे एगुड़ा है स्त्री लोक गुण एगुड़ा है पुरुष लोक गुण तो सही अनुसार जो आम से आट्रिब्यूट्स को जो आम चिंता करुचे आम भितर जो रही जाइए आम मन भितर मुंड भितर बसा करी रही दैट ऑल्सो चेंजेस और डिपेंडिंग ऑन दैट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द रोल्स टू बी प्लेड बाय मेन एंड वुमेन इन द वर्क प्लेस तेणु एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे वर्कप्लेस रे भी आज स्त्री लोक मैंने बहुत संख्यार आम देखुचे प्राय सबु प्रकार कम करें स्त्री लोक मान देखुचे किंतु आम से भाव में आम देखुचे जे स्त्री लोक मैंने कौन करें पुरुष लोक मैंने कौन करें आम यही कथाटा को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एट वर्क बोली बुझीपर तो आज क्लास रे आम एबे देखिबा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जदि एया बोली आम जानूचे स्टीरियोटाइपिंग एया बोली आम जानूचे तेल स्टीरियोटाइपिंग रे कौन कौन सब असुविधा होची एवं स्टीरियोटाइपिंग को आम कहीं बंद करिया पई जिबा कौन कौन सब स्टीरियोटाइपिंग होची एवं स्टीरियोटाइप को केमिति बंद करा जाई परिबो सो आमे जानूचे जे स्टीरियोटाइपिंग अर्थ हैला एया जे आम मन रे थिबा बसा बांधी थिबा कथा अनुसार आमे भूमिका चाहू आमे सेही अनुसार काम करथुबे स्त्री लोक सेही अनुसार काम करिवे पुरुष लोक सो व्हाट आर दोज आइडियाज let us imagine what are those ideas, let us discuss what are those ideas मु जो कहली जे आम मन भितर बसा बांधिकी रही जे यही कथा गुड़ा सब स्त्री लोकंकर गुण यही कथा गुड़ा सब पुरुष लोकंकर गुण आम कौन भाबू मोटामोटी पुरुष लोकंकर कौन गुण बोली नेचुरली वी थिंक दैट many of us actually in fact they think that men are physically stronger than women आम बहुत जन भाबू जे मेन होचंदी physically stronger than women so and mostly people think that because they are physically stronger that's why they are good at handling the risks at the job also जहाँ रिस्क आसो जहाँ असुविधा आसो ताको हैंडल करिया पई बहुत सुविधा हबो पुरुष मन को काहे कि से माने फिजिकली स्ट्रांगर एंड आल्सो ऑन द अदर हैंड वी आल्सो थिंक दैट बिकॉज दे कैन हैंडल द रिस्की सिचुएशंस दैट्स व्हाई दे आर टू बी सीन मोर इन द डिसीजन मेकर पोजिशंस सेथि पई डिसीजन मेकिंग जगह रे आमे देखिला बेले को सिद्धांत नेला भली जगह रे आमे देखिला बेले को बहुत कम संख्या रे स्त्री लोक से सुयोग पाउचंती कहीं आम भावुचे जे स्त्री लोक मैंने होचंती टिके सॉफ्ट से माने सर्विंग से माने गिविंग से माने एते फिजिकली स्ट्रांगर नुहंती से माने इमोशनल तांकर इमोशनल इंटेलिजेंस अधिका किंतु फिजिकल पावर कम से स्त्री लोक मान को आम एमती काम दबा आम ये जो स्टीरियोटाइपिंग सोसाइटी रही दिस स्टीरियोटाइपिंग इज ऑल्सो गोइंग विथ अस टू द वर्क प्लेस आम जोआड़े जाऊे काम करने जाऊे एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे जो मैंने एम्प्लॉयमेंट दौरान एम्प्लॉयमेंट दौथुवा लोक मानक मनरे एवं एम्प्लॉयमेंट पारे थिबा पुरुष आमर जो सहकर्मी मानक मनरे किछि किछि झियो मानक मनरे भी एई कथा रहुछि सब बेले जे वी आर डिफरेंट देन द मेन वी आर डिफरेंटली कैपेसिटेटेड देन मेन एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी गिवन डिफरेंट पोजिशंस देन मेन एवं एई कथा जतबे एम्प्लॉयर मनरे बसा बांधे दैट क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स सो आमे स्ट्रांगली फील करूचे जे स्त्री लोक माने किछि काम पई सुटेबल एंड मेन आर सुटेबल फॉर सम जॉब्स सो सच प्रीकनसेप्टिव ये जो प्रीकनसेप्शन रहुची ये जो प्रीकनसेप्शन आज भी डोमिनेट करके आम मन में रही से आम बहुत बहुत काम देखुचे जमती कि इफ आई विल आस्क यू द टाइप्स ऑफ द वर्क्स वेयर द वुमेन आर मोर सीन देन मेन वी कैन आल्सो मेक ए लिस्ट जमीती कि नर्सिंग जमीती कि टीचिंग जॉब जमीती कि असिस्टेंट्स जमीती कि फ्रंट ऑफिस जॉब्स यही सब काम आम स्त्री लोक मान बेसी देखू एवं ऑन द अदर हैंड आम जब पुरुष लोक मान कथा देखा आम से प्राय सब जगह देखू सब जगह कहले विशेषकर आम मैनेजरियल जॉब्स रे बेसी से देखू जो से मैनेजर्स थे सीईओ बहुत कम सीईओ स्त्री लोक बेसी सीईओ थे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इफ यू लुक एट ए स्टेज तुम गोटे डायस की स्टेज को देख सब से पुरुष लोक संख्या अधिक थी यू टेक इट फॉर ग्रांटेड आज खबर कागज भी जहाँ बाहरी थी भी जहाँ सभा समितिर जहाँ फटो थी तुम जब आज जा घरे देख से भी
तीन चार जन पुरुष लोक थे जने बा दुई जन स्त्री लोक थे एंड देयर आर मेनी मीटिंग्स देयर आर मेनी कोर कमिटी मीटिंग्स वेयर वुमेन आर completely absent so because they are preconceived as weaker sex because तांको आमे भाभी देचे the stereotyping is in our mindset that they are less capable than men सेति पई आमे तांको जोटी डिसीजन मेकिंग रो काम आसे से कथा न दे जा सर्विंग और गिविंग जेमिति घरे से माने केयर वर्क करचुन तो तांको नर्स काम दिया जिवो घरे से माने छुआ पिलांग पाठ पढ़ा कथा देखंती टिके एजुकेटेड हला पर तो तांको छोटो क्लास छोटो स्कूल माने करे पाठ पढ़िया पे दिया जिवो to protest against these things आजिकली बहुत झियो आमे देखुचे they are entering into STEM. What is STEM? Science, technology, engineering and medicine. Studies of science, technology, engineering and medicine. For long years there was a complete absence of girls and women in these fields. बहुत दिन जाए आदौ केही भी नथिले आमे भी सुनिचु हमर बड़ मान कोटु जे साइंस पाठ पढिबारे भी साइंस फील्ड कथा छाड़ी दियंतु वर्क प्लेस कथा छाड़ी दियंतु साइंस पाठ पढले सिना आगो के जिबे बा इंजीनियरिंग कॉलेज मान करे भी झियो मान संख्या बहुत कम थिला आज किंतु से सब संख्या रे टिके इंक्रीज हेछि ड्यू टू द स्टेट्स कंटीन्यूअस एफर्ट due to the continuous campaigns, due to the continuous advertisements, due to the regular सबुबले नियमित भाव में कैंपेनर्स मानकर स्टेट आउ नॉन स्टेट एक्टर्स मानकर इफर्ट्स फल ए सब कथा एबे एई कथा परिवर्तित होईची एबे स्टेम फील्ड रे आमे किछि झियो को तो देखिबा को निश्चित भाव में पाउछु साइंस रे टेक्नोलॉजी रे मेडिसिन्स रे इंजीनियरिंग रे झियो माने सब आसिलेनी एमिति कि इफ वी विल टेक आज इंडिविजुअल केसेस वी कैन सी मेनी वुमेन एंड गर्ल्स एक्सेलिंग इन वेरी डिफिकल्ट पोजीशंस जो माने बहुत डिफिकल्ट पोजीशन ने इंडिविजुअल केस कथा देखिले जदि जेतेबेले आमे कहूचे स्टीरियोटाइपिंग एट वर्क बाय एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में स्टीरियोटाइपिंग काम करूथबारु डिसीजन मेकिंग पोजीशन में स्त्री लोक देखिया को मिलुनी सेतबेले हम गोटे सामग्रिक भाबे गोटे चित्र देबाकू चाहूची आई एम गिविंग ए कलेक्टिव पिक्चर आई एम गिविंग ए लार्जर पिक्चर बट देयर आर डेफिनेटली इंडिविजुअल केसेस इंडिविजुअल पोजीशंस वेयर वी आर सीइंग वुमेन बट let's understand this that how the employment market is being stereotyped is being gender stereotyped from an example मु तुमको गोटे भल उदाहरण देबी गोटे इंटरेस्टिंग उदाहरण यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ जेआरडी टाटा टाटा कंपनी रे जे आरंभ करथिले मालिक जेआरडी टाटा का नाम हमें समस्त जानिचे जहाँ ना रे जमशेदपुर हेची टाटा नगर बोली कहूचे टाटा गोटे बहुत पुराना कंपनी आम देशर किंतु तार जो टेल्को कंपनी से टेल्को कंपनी थारे एडवर्टाइजमेंट देथिला तार ट्रेनी मान एडवर्टाइजमेंट देथिला यंग एनर्जेटिक इंजीनियर्स रिक्वायर्ड लेडीज नीड नॉट अप्लाई यंग energetic engineers required ladies need not apply so this was the advertisement and seeing this advertisement Sudha Murthy today's famous writer ajira se बहुत famous writer Padmasri Srimati Sudha Murthy we have to say Padmasri Sudha Murthy is a very famous writer Infosys Foundation co-founder she was very young and when she found this advertisement in a paper she immediately wrote a in those days you have to remember in those days in so many years back she wrote a letter to JRD Tata and she said in that letter that dear JRD Tata what you are doing is a gender bias Tata if a company of your stature Tata stature will not include girls and or will not promote gender equality instead of that if they will do gender bias then it is not expected at all from you so JRD Tata read this letter and he was he really realized that because that in the advertisement it was written itself that the language was that ladies need not apply so it was a gender bias and JRD Tata realized that so she called Sudha Murthy and JRD Tata instructed his persons at the human resource center or the who were at the recruitment cell he instructed them that Sudha Murthy should be interviewed and if she is qualifying then she should get the appointment she should get the appointment as a engineer training so in this way Sudha Murthy became the first ever female engineering trainee on the shop floor of
telco. So this happened, this occurred as someone like Sudha Murthy raised her voice. So sometimes this gender stereotyping, to remove this gender bias at the employment, we have to raise our voice. Not only girls, but both boys and girls, they have to raise their voice against this gender bias in the employment process. So one Sudha Murthy could raise her voice, but there are lots of girls in this country who are qualified enough actually to do any kind of job in the employment market, but due to this gender stereotyping at the workplace, this also hampers to get this process, this practice of gender stereotyping in the workplace also hampers to get very meritorious students, meritorious girls in different fields actually. So we can say that you can very recently there was Chandrayaan 2, ISRO रो जो मिशन थिला Chandrayaan 2 से बहुत फेमस साइंटिस्ट माने थिले, आमे समस्ते सुनिचे, एम बनिता, रीता करिढाल सेमानक ना सुनिचे. These are examples, but these are, we have to remember that these are all the examples that I am going to give you are examples of individual women who are fortunate enough, who are skilled enough, no doubt, who are meritorious, but they have also showed us a road that all the women can do that, all the girls can do that. If given the opportunity, if there will be no gender bias in the workplace, if there will be no gender stereotyping in the workplace, and they have shown that they have excelled in their own fields, we can think about Kiran Bedi. Before her, no girl in this country was an IPS officer. So to qualify IPS and to become an IPS officer and to become the first woman IPS officer of the country, and also a very successful woman, a very successful IPS officer, she has introduced many things in the police system. So these things are all done by a lady, Kiran Bedi. So and Indira Nui, you must have heard the name of Indira Nui, the entrepreneur, the greatest entrepreneur you can say, or Kiran Majumdar, the entrepreneur, or Bhavan Kant, the Bhavana Kant, the pilot of Indian Air Force. There was a day when it was a dream for the women or girls to fly the planes, but now there are girls, there are women, and fortunately enough the country has become, or the system has become, Indian system has become a bit more progressive day by day. So they have allowed girls and women to get training in piloting, and also Indian Air Force, in Army, Navy, all these forces are taking women in some of the other places. They are including women at some of the other places, at some of the other labels at least. So there are opportunities coming up, but these are very few. These are very few examples, and these are very few opportunities. There is still gender stereotyping. So for this gender stereotyping, we are still seeing people, women who are in a, suppose I will say that a woman is in the workplace, and when a woman or a girl is in the workplace, she is always expected to do the jobs which are with a woman in the house, or which are done by her in the house, like greeting someone to the office, like serving food to some guest of the office, like welcoming someone, like talking, negotiating, talking in soft voice. So these are the stereotyping which are still there in the workplace. So if that is how, or that is why we can say, आमे सेइथि पाई एई कारणरु बेसी नर्सरी टीचर्स देखुचे, बेसी नर्सेस देखुचे, बेसी फ्रंटलाइन ऑफिस रे स्त्री लोकंकु देखुचे, एवं ब्लू कलर्ड आ व्हाइट कलर्ड जॉब सब पुरुष लोकंकु जाउथबार देखुचे. So what should then we do? ताले आजिर पुओ झियो हिसाब रे आमे माने कोन करि परिबा, तमे माने कोन करि परिबो, बा पिल्ला माने समस्ते मिसी कोन करि परिबो. This is high time that we must break this stereotyping. So breaking the stereotyping is important for eliminating the stereotyping at the workplace. Stereotyping को प्रथमे भांगीबा को पड़िबो. जेमिति किरण बेदी भांगी थिले, बा जेमिति भावना कांत भांगी चंती, सेमिति there are some people who are continuously working towards breaking the stereotyping. So if we think, you know that Odisha is not a very much, a very much progressive state, but still then
the state and the government has given enough opportunities for women to prosper or to follow their passion, at least we can say. आम ओडिशा रे भी एते सुजोग मिलुची एबे झियो मानकु स्त्री लोक मानकु विभिन्न स्कीम रे विभिन्न प्रोग्राम रे जे आम ओडिशा रो ही झियो ममता साहू. You must have come across her name and I am taking her name with much pride because Mamata Sahu from, you can imagine, Mamata Sahu is a girl from Malkangiri and she is now the assistant loco pilot at Kharagpur station in Indian Railways. So Indian Railways ट्रेन चलेबा गोटे झील मान बहुत बड़ा स्वप्न हो पारे. गोटे बहुत हाई क्लास वोमेन भी ट्रेन चलेबाटा गोटे बहुत बड़ कष्टकर काम भाव देखा जाई पारे. आम यदि स्टीरियोटाइपिंग को मन को नबा, जेंडर बायस को मन को नबा, ताले इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग फॉर आवर गर्ल्स एंड वुमेन. बट ममता साहू फ्रॉम मालकानगिरी हुज पेरेंट्स आर डेली वेजर्स, जो जार बापा माँ उभय डेली वेज रे काम करती, श्रमिक भाव काम करती, से किसी बहुत बेसी ताकू बहुत जेहेतु ताकू सुजोग देइचंती पाठ पढ़ाई, खाली पाठ पढ़ाई नुहे ता स्वप्न को बंचापी. एवं ममता जो प्रथमे जो पाठ पढ़ुला से समय भी से भावुला जे मुझे गोटे स्टीरियोटाइप को ब्रेक कला भाया काम करी. जितेबाला से कहला समस्त को मुझे चाहूँगी ट्रेन चलैयापी, सो द नेचुराली द नेबरहुड पीपुल बिकज सी बिलंग्स टू ए वेरी रिमोट रूराल एरिया, गोटे ट्राइबल एरिया झील, ता सहित बहुत कम फाइनेंशियल माने फाइनेंशियल अवस्थार झील, बहुत बेसी फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स अच्छी, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस अच्छी. बापा माँ उभय दिन मजुरिया, किंतु तांको झील ममता साहू आज खड़गपुर प्रथमे से गुड्स ट्रेन चलाउथिला एवं आज से खड़गपुर रे असिस्टेंट लोको पायलट भाव में काम करुच्ची इंडियन रेलवेज रे. दिस इज वन एग्जांपल which any girl of Orissa or any girl of India can cherish. आमे याकू एंजॉय करि परिबा, आमे सेलिब्रेट करि परिबा ममता साहू करे सफलता को. एवं तम मानक पर झियो माने दिने भाबी परिबा जदि ममता साहू एक कथा करि पाले ताले आमे भी करि परिबो. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स and that is not from a very far away place, that is also from our own state. So have you heard of someone who is a pilot now, Indian Air Force pilot हबा, माने पायलट हवा जेकोसी गोटे प्लेन चलेबा एवं एयर फोर्स पायलट हवा, सेटा गोटे बहुत वायुसेनार पायलट हवा गोटे बहुत करेजियस काम एवं गोटे बहुत प्रेस्टिजियस काम. सो आमर झील जने आम कंधमाल जिल्लार झील सुश्री साई प्रणीता, सुश्री साई प्रणीता बहुत कम दिन तले सबुआड़े तार ना आसला, फोटो आसला. सुश्री साई प्रणीता एबे इंडियन एयरफोर्स ग्वालियर अच्छी, से इंडियन एयरफोर्स वायुसेनार जहाँ चलाउछन्ती विमान चलाउछन्ती. सो सी ऑल्सो हैड दैट बिग ड्रीम, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स. सो ऑल ऑफ अस शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो शुड नॉट अंडर वैल्यू द कैपेसिटी ऑफ द गर्ल्स whenever they are getting a chance. जितेबाला जोठी पुओ मानक भी सुविधा मिलूँ से भी अंडर भैल्यू करवा कथा नुहे, झील मानकर कैपेसिटी अंडर भैल्यू करवा आदौ कथा नुहे. कहीं बहुत झील बहुत महिला देश में प्रमाणित कर सारे जे स्त्री लोक मैंने सबू कम करेंगे. सो जदि स्त्री लोक मैंने सबू कम करेंगे ताले आम कहीं स्त्री लोक भाविबा जे से माने किछि पर्टिकुलर काम ही करेंगे, किछि निर्दिष्ट प्रकार काम ही करेंगे, जो प्रकार काम सहित तांकर घरोई भूमिका संपर्कित ना. When they are going to the employment market, they can also do many kind of works and all kinds of works in fact which are done by the main colleagues. जहाँ पुरुष सहकर्मी माने करुचंती, जहाँ पुरुष माने करुचंती सबु भूमिका रे सबु भली भाव रे स्त्री लोक माने सबु जगह रे करि परिबे. ए सब कथा कथावार्ता हेई सारला परे आमे भाबिया, डू यू थिंक दैट वुमेन हैव लेस कैपेसिटी देन मेन? तमाने भावुच कि स्त्री लोकर कम क्षमता अच्छी पुरुष लोक अपेक्षा, जमती गोटे स्टीरियोटाइप आइडिया अच्छी आम मनरे जे स्त्री लोक मानकर फिजिकल कैपेसिटी कम, से कम काम करें. डू यू थिंक दैट, डू यू बिलीव इन दैट? आम यही कथा भाविबा द्वारा आम देशर कैपेसिटी जो सामग्रिक क्षमता आ सामग्रिक दक्षता को आम वेस्ट करुचे ना नहीं. एवं ये जो स्टीरियोटाइप गुड़ाक एम्प्लॉयमेंट मार्केट को जो जोड़ाक एफेक्ट करुच्ची बा जोड़ा एडभर्सली एफेक्ट करुच्ची, ऋणात्मक भाव में जहाँ प्रभावित करुच्ची आमर एम्प्लॉयमेंट मार्केट को, एगुड़ा रिजनेबल कि तर्कसिद्ध कि एगुड़ाक एक्चुअली युक्तिसम्मत कि, एवं आम ये डिस्क्रिमिनेशनटा केमितिया भाव में सारी पारिबा.
बा ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होची ये जो वैषम्य अच्छी ये जो विभेद अच्छी जे नाई स्त्री लोक मैंने ये सब काम करेंगे तो से वर्क प्लेस भी ये सब काम करेंगे आम तो एत बड़ बड़ काम करुवा स्त्री लोक देखीचे इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑल्सो हैड इट्स वुमेन प्रेसिडेंट आमर वुमेन प्रेसिडेंट अच्छा वुमेन प्राइम मिनिस्टर अच्छा वुमेन चीफ मिनिस्टर अच्छा आम निज स्टेट्र ये सब सत्ते व्हाई दिस स्टीरियोटाइपिंग ये सब इंडिविजुअल वुमेन मैंने जो मैंने अपॉर्चुनिटी पाई जो मैंने इक्वाल जेंडर इक्वालिटी सहित बढ़ी से सब कम कर दक्षता को बारंबार प्रमाणित कर सारा कहीं कम जगार एत जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रोचे सो आम समस्ते चेष्टा करवा ये जो एज ओल्ड माइंड सेट रही तार विरुद्ध रे युद्ध करवा ताकू हटेबा जहाद्वारा कि आम सब से भाविबा जे मेन मानकर जहाँ पोटेंशियल अच्छी जहाँ इनर कैपेसिटी अच्छी स्त्री लोक मानकर मध्य से इनर कैपेसिटी अच्छी सो बाय allowing women to enter the employment market and giving them an equal space we can ensure that right to livelihood and we can also create a gender neutral employment market like all the spaces of our life the employment space is also very important because it gives us you can say it gives us security, it gives us food security, it gives us employment and it also enhances the capacity of the state of the country employment market jo jaga employment market jo sthana seti jodi we know that 50% of the population of this country and of this globe is women joti 50% population is women we cannot ignore them we cannot ignore their position their capacity inside the employment market and for this reason if we do not think from today आम जदि भाविबा नहीं जे तांको कैपेसिटी एका एवं आम जदि सेमानकु इक्वाल अपॉर्चुनिटी न दबा ए जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भितर पसिबा एवं जो बहुत जुगर जो बहुत दिन तलर ओल्ड माइंड सेट आमर रही वी हैव टू ब्रेक इट वी हैव टू व्हेन आई से वी हैव टू ब्रेक इट दैट मीन्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू ब्रेक इट बॉयज हैव टू थिंक दैट ए गर्ल इज equally having the capacity or a girl is having equal capacity as his and a girl has also to instill in her that she has the capacity to do anything that a boy does पुओ माने भी भाविया कथा जे झियो मानकर दक्षता अच्छी झियो मानकर कैपेसिटी अच्छी क्षमता अच्छी सामर्थ्य अच्छी सब कथा करि परिबे से माने जहाँ पुओ माने करि परचंती झियो माने भी निजे भाविया कथा जे नाई आमे कोनोसी काम करिया पे डरिबा नाई आमे पाखरे भी से क्षमता अच्छी से सामर्थ्य अच्छी जहाँ जे कोनोसी गोटे पुओ पिला पाखरे अच्छी एवं उभय ए स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करिया को पड़िबो ए ग्लास सीलिंग को ब्रेक करिया को पड़िबो ताहले जाई आमे वर्क प्लेस गुडाक बेसी सिक्योर करि परिबा जते बेले वर्क प्लेस रे कम स्त्री लोक रहिबे से जाय वर्क प्लेस ता इनसिक्योर हे रहइबो वुमेन पई जो जाय आमे स्त्री लोक को बेसी सुजोग दबानी एम्प्लॉयमेंट मार्केट को पसिबा पई 50% पॉपुलेशन जदी आमे बहुत कम संख्या रे बहुत कम अनुपात रे स्त्री लोक को आमे एम्प्लॉयमेंट दबा ताले सेटा देशर जीडीपी को मध्य देशर जो समुदाय जो सामग्रिक जीडीपी ताकू मध्य सेटा कम करी देखिबो तेणु देशर सामूहिक आय देशर सामूहिक अर्थनीति को दुर्बल करिबो जदि आमे वुमेन को एगेंस्ट ए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन द वर्क प्लेस जदि आमे माइंड दबा सो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट इट्स ऑल अबाउट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इट्स ऑल अबाउट हाउ वी लुक एट वुमेन as people how we look at women as having capacities to do anything that any man can do actually so it's not that women are physically less stronger than men it's not at all that women can do only soft jobs and men are fit for the white colored or blue colored jobs आम जहाँ को कहूचे केवल पुरुष लोक मैंने से काम करें एवं स्त्री लोक मैंने सब जाक कोमल काम करेंगे सब जाक सहज काम करेंगे आम जब सब यही कथा भाविबा ताहले आमे गोटे जेंडर इक्वालिटी जमारू आसी परिबो नाही लिंग साम्यता बा लिंग समानता आदौ आसी परिबो नाही व्हिच इज द बेसिक राइट्स ऑफ ऑल द वुमेन ऑफ दिस कंट्री व्हिच इज आल्सो ए फंडामेंटल थिंग ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आमे संविधान को देशर सबुठारु बड़ सर्वोच्च आईन बोली कहूचे द लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड बोली कहूचे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोली कहूचे सो इमेजिन जदि ममता साहू
आ जदि साई प्रणीता से मैंने जहाँ कले जदि तुम क्लास थिबा पिला माने सेही कथा करि परिबे काली ताहले आमे तमरो भी एग्जांपल पाइबा पुन थरे परवर्ती कोठी गोटे बही रे आसीबो कोठी गोटे खबर कागज रे आसीबो जे एई क्लास रु बाहर थिबा झियो माने भी जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करूचंती तेनु आज समय रा आह्वान इट्स अ चैलेंज ऑफ द टाइम इट्स नीड ऑफ द टाइम दैट आमे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को पूरा पूरी भाबे बंद करिबा एवं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रो अगेंस्ट रे काम करिबा आमे समस्त भाबिबा जे we all are equal so the workplace should be safer for women the workplace should be secured for women all positions should be open for women नाइ कि जेमती टेलको रे दिया हेतला एडवर्टाइजमेंट लेडीज नीड नॉट अप्लाई सेमिति आ जोठी तम मान देखुचो पिला माने कोनोसी प्रकार जदी एडवर्टाइजमेंट केबे सेठी आसुची देन रेज योर वॉइस दिस इज द टाइम टू रेज योर वॉइस तमे सेठी वॉइस रेज करि परबो जदी सुधामूर्ति एते दिन तळे तांका वॉइस रेज करि गोटे स्पेस को टेलको रे गोटे स्पेस को पूरा पूरी जेंडर न्यूट्रल करबा दिगरे कंट्रीब्यूट करि परथिले वी ऑल कैन डू दैट आमे समस्त प्रकृति रे सेया करि परिबा जदी सुधामूर्ति करथिले जेमति जेआरडी डाटांग भलिया एम्प्लॉयर से कथाटा रियलाइज करथिले सेमति सब एम्प्लॉयर मानन को मेन एंड वुमेन बोथ समस्त को आज जेते बळे व्हेन वी सी दैट देयर हैज बीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीट्स रिजर्व्ड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स आल्सो राजनीति रे एते स्त्री लोक मानन पई डिसीजन मेकिंग लेवल ले आमे स्त्री लोक मानन पई संरक्षण व्यवस्था अछि आसन संरक्षण व्यवस्था अच्छी स्त्री लोक मान संख्या एनश्योर करने निश्चित करने बहुत गुड़ाए सुविधा सुजोग दि जाऊँगी से समय वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स ए जेंडर न्यूट्रल टुवर्ड्स ए जेंडर बायस फ्री फ्रॉम जेंडर बायस और जेंडर न्यूट्रल एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड बिकॉज एम्प्लॉयमेंट डिफाइन्स आवर डेवलपमेंट जदि एम्प्लॉयमेंट न मिले झील मान को ताहले आमर लाइवलीहुड केबे हेले इनश्योर हो पारिबनी एवं स्त्री लोक को जेते जेते बेसी आमे देखिबा एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड रे जेते बेसी आमे देखिबा जॉब मार्केट रे आमे भाबिबा जे आमर जॉब मार्केट 50% पॉपुलेशन भितर सेते अधिक को आनिची सो वी आर नॉट वेस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन शुड नॉट बी वेस्टेड इमेजिन तमे पिला माने चिंता करि परिबा जदि आमे एबे जदि मु जदि काहा को प्रश्न पचारे जे कैन यू एक्ट लाइक ममिता साहू और कैन यू ब्रेक one gender stereotyping or in your lifetime we also have ताले तमे कौन आंसर करिवो ताले तमे कौन भाबिबो सो आस्क योरसेल्फ जे कैन वी डू दैट इन आवर ओन लाइफ आमे आम जीवन रे भी सेमिति करि परिबा कि आमे जोठी एम्प्लॉयर हबा आमे सेठी स्त्री लोक मान को केबे हेले इन्फीरियर भाबिबा नै आमे जोठी स्त्री लोक मान को पई सबु काम सबु जगह सबु पोजीशन ओपन करिबा एवं झियो माने भी भाबिया कथा बिकॉज आम पाखरे कैपेसिटी अछि इक्वल कैपेसिटी तेणु आमे कौनसी कथा को न डरिकी सब कथा को आमे एक्सेप्ट करिबा apart from all these things one important thing I want to mention here that we have very beautiful movies in this am click देइछु आमे लिंक देइछु YouTube रे लिंक दिया हिची एई चैप्टर रे बहुत सुंदर सुंदर मूवी स्टीरियोटाइपिंग ऊपर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एट वर्क ऊपर यू मस्ट वॉच इट सब पुआ और सब झियो माने ताकू देखिबो से मूवी को छोट छोट मूवी बहुत कम समय रे मूवी एंड यू कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दैट सो with this I wind up this class. So gender stereotyping at work is concluded. Thank you very much.